Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Al Furqan Islamic Education Center. इंशाल्लाह हम इस वीडियो में जो रिमेनिंग लेटर्स थे वही लेसन 1 नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो हमारे पास लेसन 1 के रिमेनिंग लेटर्स है इनको हम कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में वाव तक लेटर्स कवर किए थे। सो अभी जो बाकी लेटर्स हैं इंशाल्लाह हम इन्हीं लेटर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस तरह हम स्टूडेंट्स को एक दिन पढ़ाने के बाद जब दूसरा दिन वो आते तो हम उनसे मतलब प्रीवियस लेसन के बारे में पूछते हैं, हम उनसे मतलब थोड़ा बहुत रिहर्सल करवाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट रिसाइट आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, और फिर हम मतलब लेटर्स की रिकग्निशन के बारे में उनसे पूछते हैं whether that is through the actual page of the lesson, चाहे वो मतलब उसी लेसन का पेज हो या पेंटिंग के थ्रू हो, लेकिन हम उनसे मतलब लेटर्स रिकग्निशन के बारे में पूछते हैं कि ओके इस लेटर में हमारे पास कितने डॉट है और लेटर का शेप किस तरह है, लेटर की डॉट्स की पोजीशन मतलब कौन सी है। तो इनसे मतलब इन्हीं लेटर्स के बारे में रिहर्सल उनसे करवाते हैं ताकि मतलब उन्हें मतलब क्लियर हो जाए और उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत और मतलब डिफ़िकल्टी ना हो। तो इंशाल्लाह हम अभी इस वीडियो में जो है ना ये जो रिमेनिंग लेटर्स है हमारे साथ इनको कवर करेंगे। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने वाव तक लेटर कवर किए थे, तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर है जो न्यू लेटर है वो आइन का है। तो और ये जिस तरह हमने ये मतलब स्टूडेंट को पढ़ाना होता है तो हमने इसको इंग्लिश में किस तरह उनको हमने उनको ये क्लियर करवाना होता है या मतलब उनको अच्छी तरीके से पढ़वाना होता है। तो वी हैव टू से लाइक जब हम ये स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट एंड दिस इज द next letter, and this letter has this very specific shape, like as you can see that the first part is in such a position and then it is elongated like that. So when we have this kind of shape anywhere in the whole qaida, so you have to recognize it from now. So you have to recite such shape of letter ain. Ain. This is actually the actual shape of the letter. So it should be recognized from now. Anywhere you will see this shape of letter, so you always have to keep it in mind that this letter is Ain. ओके तो फिर हम उन्हें मौका देते हैं ताकि वो हमारे पीछे रिपीट कर सके। तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके व्हाट इज दिस लेटर इन हाउ टू रिसाइट, तो कहते हैं कि आइन। आइन हम उन्हें कहते हैं कि रिपीट आफ्टर मी, हमारे पीछे पढ़े। तो इसी तरह वो हमारे पीछे पढ़ते हैं कि आइन। इसी तरह हम उन्हें कहते हैं कि दिस इज अ ब्लैक लेटर and black letter is to be recited softly with no stress with no accentuation। इसमें मतलब किसी भी मतलब स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली और मतलब सॉफ्टली हमने इस तरह के लेटर को रिसाइट करना है। इसी तरह फिर हम दूसरे नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट दिस इज द नेक्स्ट लेटर which is in green color, as we discussed last time in the previous video that green color letters are to be recited heavily. It should be recited with accentuation, with stress, or like to recite in a heavy way or in a heavy manner. So this letter has just like the first one or the previous letter shape. There is no difference in their shape, but there is the addition of one dot on the top. So because of that dot we have to recite it differently. So we tell them that you should recite in such a way that ghain, ghain. देन वी गिव देम चांस, फिर हम उन्हें मौका देते हैं ताकि वो भी हमारे पीछे रिपीट करे। वी टेल देम दैट रिपीट आफ्टर मी डियर स्टूडेंट। सो इसी तरह वो फिर रिपीट करते कि गैन, गैन, द फर्स्ट वन आइन। वी टेल देम रिपीट आफ्टर मी द सेकंड वन गैन, डियर स्टूडेंट रिपीट आफ्टर मी।
तो वो इसी तरह हमारे पीछे पैर मतलब रिपीट करते हैं कि गईन। फिर हम लास्ट लेटर, लाइन नंबर 4 में लास्ट लेटर जो होता है इनके बारे में हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ this is the last letter of the fourth line which is in black color. So when we have this kind of shape, when we have this kind of shape, so you have to keep it in mind, you have to recognize it, you have to recognize it from now that a letter with this very position anywhere in the Qaida that that comes to you, so you have to recite it, which has a kind of dot, which has one dot on the top. So a letter with this shape and with one dot on the top, so you have to recite it. Fa, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स है, तो हम उन्हें उसकी एग्जांपल्स देते हैं कि FAA fa. We tell them that dear student, when we have this very specific shape which has one dot on the top and which is in this very position, in this very shape, so you have to keep it in mind that a shape which has one dot and it is in black color, so black color letter is to be recited softly, and keep it in mind that when we have this letter and this kind of letter has one dot on the top, so we have to recite it as we have in English alphabet FAA. So it sounds exactly like this letter, that fa, fa, fa. और फिर हम उनसे रिवीजन करवाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट वन, तो वो कहते हैं कि आइन। फिर हम सेकंड के बारे में पूछते हैं कि ओके नाउ हाउ टू रिसाइट द सेकंड लेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रीन लेटर एंड व्हाई डू वी रिसाइट इट हैवीली। सो वो मतलब दौरली इसको डिस्कस करते हैं कि ग्रीन लेटर्स, जिस तरह हमने मतलब पिछले वीडियोस में बताया कि ये हमारे पास हैवी लेटर्स होते हैं, और इसी तरह शेप्स के लिहाज से इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन डॉट्स के लिहाज से इनमें फर्क है। तो इन डॉट की डिफ्रेंसिएशन की वजह से हम इनको डिफरेंटली डिसाइड करते हैं, तो हम कहते हैं कि गईन। इसी तरह फिर हम लाइन नंबर 4 में लास्ट वाला लेटर जो होता है इनके बारे में पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ टेल मी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन और हाउ टू डिसाइड दिस लेटर। तो वो कहते हैं कि फैब, फैब, फैब। फिर हम लाइन नंबर 5 में आते हैं। ओके नाउ दिस इज लाइन नंबर 5 एंड लेटर नंबर फर्स्ट which is again in green color, which is to be recited heavily because it is in green color। तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज अगेन इन ग्रीन कलर, ये हमारे पास फिर ग्रीन कलर में है, और ग्रीन कलर लेटर को हमने मतलब हेवीली रिसाइट करना है। और दिस लेटर हैज, तो हम उनसे कहते हैं कि ओके, and this letter, as we can see that the beginning part which is just like in a rounded, or we can say that it is like in such a position or in such a shape. Okay, so when we have this kind of shape which has two dots on the top, so we have to keep it in mind, we have to recognize it very well from now that a letter with this very shape which has two dots on the top position, so we have to call it qaf, खौफ। फिर हम उन्हें मतलब ये मत के बारे में थोड़ी बहुत मतलब आगाही देते हैं, क्योंकि ये हम मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके साथ मतलब हमने इनके साथ ये कवर करना होता है कि अभी देखो डियर स्टूडेंट, इसमें ये हमारे पास एक साइंबल है, इस साइंबल को या इस साइन को हम मत कहते हैं, और मत का फंक्शन जो है वो मतलब स्ट्रेचिंग है,
ताकि हम इनको स्ट्रेच करें। और फिर स्ट्रेचिंग का भी अपना एक रेंज है कि मिनिमम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 5 सेकेंड। तो ये भी हम उन्हें मतलब क्लियर करवाते हैं कि ओके दैट इज व्हाई वी रिसाइटेड लाइक we stretch the letter, we recite it long, like little bit longer. So we tell them that we have to recite this letter qaf, qaf, with like with very clear pronunciation, because this letter is in green color and it has two dots on the top and it has this very shape. So that is why it should be recited in such a way that Qaf. और फिर हम उन्हें मौका देते हैं कि repeat after me, dear student. We give them chance to repeat after us. So they repeat after us that Qaf. इसी तरह फिर हम उन्हें कहते हैं कि okay dear student, now let's move toward the next letter. हमारे पास जो next letter है वो it is in this very position, as we can see, which is in black color. The first part is very teeny, but the second part is a bit bold. So when we have this kind of shape which has this kind of symbol in the middle as well, so when we get this kind of shape which is in black color, and it has also a kind of symbol, a kind of sign of mud which is to be stretched. So we have to recite such a letter that kaf, kaf. As in English we have K-double-A-F, kaf. We give them chance to repeat after us that kaf. So they repeat after us that kaf. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ फिर जाते हैं कि ओके that was all about the previous letters. Now let's move toward the next letter. As we can see, इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि the next letter has this very shape, this very structure. So when we have this kind of shape in which the first part is again teeny and the lateral part or the second part is bold, or we can say that the first part is just like a leaf and the second is like elongated in such a way. So when we have this kind of shape with zero dot either in the top, bottom or in the middle, so इस तरह का लेटर फिर हम मतलब किस तरह रिसेट करते हैं? We teach them that when we have this shape of letter which has zero dot either in the top, bottom or in the middle, so which is also in black color, so it is also to be recited softly. So such a letter is to be recited lam, लैम। फिर उन्हें हम मौका देते हैं ताकि वो भी हमारे पीछे रिपीट करें, क्योंकि रिपीटिशन और इसी तरह मतलब इनको मौका देना ये इनका मेन अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम मतलब अगर हम उनको अपने साथ रन करते हैं ना, तो यही लाइक द बेस्ट टीचिंग इज लाइक दिस टाइप ऑफ टीचिंग दैट यू ऑल्सो गिव देम चांस टू रिपीट आफ्टर यू। तो हम सिर्फ मतलब इनको ये लेटर डिस्कस नहीं करते, हम इनको अपने साथ मतलब ले चलते कि लुक डियर स्टूडेंट, दिस इज दिस वेरी शेप, इट हैज दिस मच डॉट इन द बॉटम, इन द टॉप, इन द मिडल। तो जितनी मतलब हम उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जितनी हम उनको मतलब ज़्यादा एलाबोरेशन देते हैं, तफसील देते हैं और उनको मतलब हम मौका देते हैं ताकि वो मतलब ख़ुद प्रैक्टिस करें, आपके टीचिंग के बाद आप मतलब उन्हें मौका देते हो, तो ये इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो हम उन्हें एक मतलब मौका देते हैं ताकि वो उसी वक्त लेटर को अच्छी तरह कंसेप्चुलाइज कर सके और इसी तरह मतलब रिकग्नाइज कर सके। तो दिस इज़ अ गुड मेथड टू डू। हमारे पास एक बेस्ट मेथड होता है ताकि हम स्टूडेंट्स को अपने साथ ले मतलब ले चल सके। तो इसी तरह मतलब मुझसे पूछते हैं कि डियर स्टूडेंट, लेट्स डू द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स दैट द फर्स्ट वन इज आइन। हम फिर उनसे मतलब सेकंड लेटर के बारे में पूछते हैं कि नाउ द सेकंड वन इज, तो कहते हैं कि गैन। फिर थर्ड के बारे में व्हाट इज दिस लेटर डियर स्टूडेंट, सो वो कहते हैं कि फा, फा।
Okay, and then in the fifth line, we ask them that what is the first word in the fifth line, which is in green color, which has two dots on the top. So the student tells us that it is letter Qaf. We ask about the reason that why do we recite it heavily, and it's also kind of clear word like Qa sound is there. So they tells us that it is actually in this shape and it has two dots and it is in green color. That's why we recite it qaf. फिर हम इसी तरह नेक्स्ट लेटर के बारे में उनसे पूछते हैं कि ओके हाउ टू रिसाइट दिस लेटर, how to recite this letter, dear students. So students tell us that it is letter kaf. Calf with no stress because it is in black color with no any heavy level. So simply or softly to recite such a letter. Okay, फिर हम इसी तरह मतलब नेक्स्ट लेटर के बारे में उनसे पूछते हैं कि ओके नाउ टेल मी अबाउट दिस लेटर, व्हिच इज दिस लेटर. तो स्टूडेंट टेल अस दैट दिस इज लेटर लाम, क्योंकि ये एक मतलब हम उनको मौका देते हैं ताकि जो कुछ हमने उनके साथ डिस्कस की है ताकि वो खुद भी इसकी रिपीटिशन करे और उसका मतलब रिहर्सल करे. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेटर्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लेटर. तो हम उनसे पूछते, हम उनको मतलब कहते हैं कि डियर स्टूडेंट दिस इज द नेक्स्ट लेटर and in this letter the first part is in bold and the second part is in teeny shape, or we can say that the first part is bold and the second is teeny. So when we have this kind of shape, when we have this kind of shape that it starts from the top and then it finishes in the bottom, so such a letter is to be recited, which is in black color as well. So it should be recited meme, meme. और रिटन फॉर्मेशन ताकि उनको मतलब कोई भी दिक्कत कोई भी डिफिकल्टी ना हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि एज इन इंग्लिश अल्फाबेट एज वी हैव एम डबल ई एंड एम, मीम, meme. We have to little bit stretch it because of that mud sign, because it's a stretching symbol and it functions as stretching. And so that's why we also make them clear with that symbol as well. So we tell them that it is a letter meme, like in English M-E-E-M, meme. फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं कि ओके दिस लेटर इज इन दिस वेरी पोजीशन इन दिस वेरी शेप. सो अ लेटर व्हिच इज इन दिस काइंड ऑफ शेप व्हिच हैज वन डॉट इन द मिडल, so such a letter is to be recited noon. फिर हम उन्हें मौका देते कि व्हाट इज दिस लेटर डियर स्टूडेंट्स. सो वो कहते हैं कि noon. Then we ask about the reason that why it is called noon. So they tell us that it is in this shape and it is one dot in the bottom in the middle. So that's why we recite it noon. इसी तरह फिर हम लास्ट लाइन की तरफ जाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट नाउ लेट्स डू द अपकमिंग और द नीव लेटर्स. जिस तरह हम देख सकते हैं कि लास्ट लाइन में जो हमारे पास पहला वर्ड है वो कौन सा वर्ड है. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग विद देम सो वी टेल देम दैट ओके डियर स्टूडेंट अ नीव लेटर इन द लास्ट लाइन इज in this very shape. So a letter which is in this shape which has such a shape which is in black color, so we have to keep it in mind, we have to recognize it, we have to recognize such a shape of a letter that it is in this very shape. So anywhere in the qaida when we have this kind of shape, so we have to recite it wow, wow. हम फिर उनसे पूछते कि हाउ टू रिसाइट दिस लेटर. तो वो कहते हैं कि वाव, वाव बिकॉज इट इज इन ब्लैक कलर, ये हमारे पास ब्लैक कलर में है, इसमें न कोई मद है न कोई डॉट है, चाहे वो मतलब मिड में हो टॉप में हो या मतलब बॉटम पे हो,
इसमें कोई भी डॉट नहीं है, ना कोई मद है, सिंपली ब्लैक लेटर है। तो ब्लैक कलर लेटर को हम मतलब सॉफ्टली रिसाइट करते हैं। तो इसी तरह हम उनको यही मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं कि डियर स्टूडेंट, दिस इज अ ब्लैक लेटर, इट इज विद जीरो डॉट, इट डज नॉट हैव any dot any dot in any position. So such a letter should be recognized in the mind, should be kept in mind, that such a letter that we see anywhere in the Qaida, we have to recite it wow, wow. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट लेटर है। यही बात है जब हम इंग्लिश में करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स do the next letter, and this is the next letter which is in this very shape, so you have to keep it in mind that the recognition of the letter should be in such a way, and it is in this very shape. So keep in mind that when you see such shape of letter, so you have to call it ha, ha, but not that one ha, because you also have to tell them, as you have to look at the age factor. आपने age factor को भी देखना पड़ता है कि अगर स्टूडेंट मेच्योर है तो फिर आप उनके साथ इस हा में और इस हा में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। अगर मतलब एज के लिहाज से वो मतलब इमेच्योर है, या मतलब इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना बराबर नहीं है, और मतलब फ्रेशर है, बिगिनर है, तो फिर आपने मतलब ये चीज़ें इस लेवल पे आपने मतलब उनके साथ डिस्कस नहीं करनी होती, क्योंककि ये बाद में खुद ब खुद फिर मतलब इनको स्लोली ग्रेजुअली टाइम टू टाइम मतलब कवर होता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप फिर बाद में भी दे सकते हैं कि दिस इज हा एंड दैट वन इज हा। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज नाउ द नेक्स्ट लेटर which is in such shape. So a letter in this shape, a letter in this color, a letter in this very structure. Keep in mind that when you see this shape of letter, this structure of letter, this color of letter, so you have to recognize it. You have to recognize it. You have to learn the correct pronunciation, the correct recitation of this letter, and that is actually hamza, हमजा। और फिर हम उन्हें मौका देते हैं कि वो भी हमारे पीछे रिपीट करें। सो वी टेल देम रिपीट आफ्टर मी डियर स्टूडेंट हाउ टू रिसाइट दिस लेटर। सो कहते हैं कि हमजा, हमजा। इसी तरह फिर हम आगे लेटर की तरफ जाते हैं कि डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज द नीव लेटर, द नेक्स्ट लेटर विच इज इन दिस shape. So keep in mind that a letter that you will see in this shape, which will have two dot in the bottom, so you have to recognize it with the pronunciation or with the recitation ya, ya. Anywhere in the Qaida, when you will see this type of shape, this shape of letter, so you have to recite it ya, या। फिर इसी तरह हमारे पास ये जो लास्ट वाले लेटर है, इसी लेसन का जो लास्ट वाला लेटर है, इसे भी हम मतलब सेमली प्रोनाउंस करते हैं, और इसी तरह हम इसको भी रिसाइट करते हैं। और हम स्टूडेंट्स को इसी तरह कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ही लेटर है लेकिन टू शेप्स में, वन लेटर विथ टू शेप्स, वन लेटर विथ टू शेप्स, बिकॉज एशिया और एशिया में कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि इन दोनों का शेप्स सेम है, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन में भी कोई फर्क नहीं है, और ना डॉट्स की बुनियाद पे कोई फर्क है, सिर्फ शेप्स डिफरेंट है। तो हम उन्हें मतलब कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट, दीज टू आर या लेटर्स and there is no difference in their recitation, in their pronunciation. But the difference is that these both are one letter but in different shape. These both are one letter but in two shape. This is also called ya letter and this is also called ya letter. So फिर इसी तरह ताकि ये लेटर्स इनको मतलब कंप्लीटली और एब्सोल्युटली मतलब कवर हो जाए और इनके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो मजबूत हो जाए, तो फिर हम उनको प्रैक्टिकली लेटर्स ड्रा करवाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा लेटर्स
and you will have to tell me that which letter is which one. Okay, so इसी तरह फिर हम मतलब लेटर ड्रा करते हैं और we ask them that dear student, हम उनसे फिर पूछते हैं कि dear student, I have drawn one letter, so you have to tell me which letter is this. तो जिस तरह वो लेटर को देखते हैं तो कहते हैं कि this is letter आइन. So we ask them about the reason that why do we call it आइन. तो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ना डॉट नहीं है, जीरो डॉट है, तो इस वजह से हम इसको मतलब आइन प्रोनाउंस करते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि जो वीडियोस या मतलब जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं वो फिर वो मतलब या लाइक मतलब जिस तरह हमने ये चीज़ें पहले से ही उनके साथ डिस्कस की होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो मतलब रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो हम फिर उनको मतलब डिस्करेज नहीं करते ताकि हम उनको मतलब फिर से अप्रिशिएट करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स से प्रैक्टिस अगेन, लेट्स डू द रिहर्सल ऑफ द सेम रिपीटेड लेटर्स. और फिर हम मतलब अगेन उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनको मौका देते हैं, उनको मतलब प्रीवियस जो लेटर्स होते उनके साथ मतलब उनका प्रैक्टिस करवाते कि नाउ टेल मी विच इज दिस लेटर. तो अगर वो कहते तो हम उनको मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अगर मतलब ना भी कहते तो हम उनको मतलब फिर से उनके साथ प्रैक्टिस करवाते हैं. तो इसी तरह फिर हम इनमें मतलब एक डॉट ऐड करते हैं और हम उनसे फिर पूछते हैं कि व्हाट इज दिस लेटर एंड हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू डिसाइड. तो वो मतलब लेटर से भी, लेटर के शेप से भी रिकग्नाइज कर सकते हैं और इसी तरह मतलब लेटर के डॉट से भी रिकग्नाइज कर सकते हैं. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर ड्रा करते हैं and we ask them, dear student, tell me about the recitation of this letter, how to recite this letter. तो इसी तरह वो मतलब जिस तरह शेप को देखते हैं, इस तरह मतलब लेटर के डॉट को देखते हैं, तो वो इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेटर फ है, लेटर फ है. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर को ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा अनदर, और साथ साथ हम उन्हें मोटिवेशन भी देते हैं कि माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, गुड, आउटस्टैंडिंग, रियली वेल, अमेजिंग. और एट द सेम टाइम हम उनसे मतलब इन डॉट्स की पोजीशन के बारे में भी पूछते हैं कि इसमें हमारे पास कितने डॉट है और कहाँ पर है. तो ये क्वेश्चंस हम उनसे क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि ये जो जो मतलब लेटर्स हम उनके साथ डिस्कस करते हैं ताकि वो मतलब अच्छी तरीके से उनको मतलब याद हो सके और ये अच्छी तरीके से इनको मतलब रिकग्नाइज कर सके. ये सिर्फ और सिर्फ मतलब हम इस मकसद के लिए उनके साथ पेंटिंग में प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरह मतलब हम लेटर्स को ड्रा करते हैं. फिर मतलब बाज़ औक़ात हम मतलब डॉट्स को ऊपर की तरफ ले चलते हैं, नीचे की तरफ पेट में ड्रा करते हैं लेटर्स जिनमें हमारे पास शेप सेम होते हैं लेकिन डॉट्स का फर्क होते हैं, तो हम उन लेटर्स में इसी तरह मतलब करते हैं. ये वेरिएशन जो है ना वो हम डॉट्स में ले आते हैं कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मिड में, ताकि इनको मतलब अच्छी तरह समझ आ जाए. इसी तरह फिर हम मतलब नेक्स्ट लेटर्स ड्रा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डियर स्टूडेंट, माशाल्लाह, इट वाज नाइस, you corrected all of the shapes of letters, but now I'm going to draw some other letters. Tell me about the pronunciation of this letter, that how to pronounce this letter, and do we have any dot in this letter, how to recite it. So इसी तरह के क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं, तो वो हम मतलब हमें रिस्पॉन्स देते हैं कि दिस इज दैट लेटर, दिस इज दिस लेटर. इसी तरह पर हम मतलब नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं कि ओके नाउ दिस इज विच लेटर. तो वो कहते हैं कि मीम. वी आस्क अबाउट द रीजन दैट व्हाई डू वी कॉल इट मीम. हम उनसे पूछते हैं कि व्हाई डू वी कॉल इट मीम. तो वो हमें मतलब रिस्पॉन्स देते हैं कि इसमें इस तरह है कि बिगिनिंग पार्ट इस तरह है, लेटरल पार्ट या मतलब सेकंड पार्ट जो है ना वो इस तरह है. तो वो मतलब
जस्टिफाई करते हैं हर एक मतलब लेटर को, कि इसमें ये लेटर है और इसमें इतने डाट है, डाट की पोजीशन ये है वो है। तो ये सब कुछ मतलब वो खुद ब खुद जस्टिफाई करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द लेटर, and we discuss them with painting as well, and we teach them with like through every angle so that we can understand them easily. So it was all about the first letter. Inshallah we will also and discuss about the next letter in the next video. Best of luck. Have a good time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.